Hello, how's it going, guys? Welcome back to another episode of the Crictime Podcast. It's been a while, 1 week since we discussed a lot of things, and Suyash is joining me again today. We've had some incredible discussions. We're going to have some incredible discussions today as well. India are finally Asia Cup champions. We'll begin with that. But before we get into any of that, make sure you leave a like rating on this podcast. Make sure you add it to your playlist if you're listening on an audio platform. Make sure you subscribe. Follow all of our social media pages for the latest news on Chelsea, on cricket, throughout the cricketing season and the World Cup. Whenever I have Suyash in front of me, मुझे हमेशा Chelsea की याद आती है. But anyway, Suyash, welcome to the podcast again. Congratulations, India has finally won something in cricket. 2013 के बाद पहली trophy घर आ रही है, which is not a bilateral trophy if you want to say it that way. भाई सही में मतलब व्हाट अ डे मैन लाइक टॉस वी सॉर्ट ऑफ लॉस्ट। तो मैं सोच रहा था यार ये रोहित शर्मा का हमेशा ही है, मेन मैचेस में टॉस ही हार जाता है। बट उसके बाद जो सिराज ने किया है, मीन 51 नीडेड इन 50 ओवर्स, जब वो लिखा हुआ था आई वाज थिंकिंग भाई क्या कर दिया इंडिया ने। तो आई थिंक पता नहीं कितने सालों में ऐसा कभी ना देखा ना सोचा, वो भी नॉकआउट गेम में। सो आई मीन इनक्रेडिबल भाई। मैं तो चिल्ला रहा था मैच के बीच में आए, लाइक एक ओवर में 4 विकेट, फास्ट बॉलर इन द बिगनिंग व्हेन डिफेंड कर रहे हैं। लाइक जैसे मलिंगा ने भी 4 विकेट जो लिए थे, हम्म 5 विकेट वो लिए थे टुवर्ड्स द डेथ। जब बैट्समैन मारने को देख रहा होता है तो विकेट लेना हम्म आसान होता है, बट ही टुक इट इन लाइक हिज सेकंड ओवर। तो मतलब इनक्रेडिबल भाई। सिराज की तो जितनी तारीफ करें कम है। ब्रिलियंट, बहुत कसम से बहुत मजा cause आया। मैं 12:30 बजे मैं सो रहा था। मैं 12:30 बजे मैंने अपना फ़ोन चेक किया, उसमें लिखा है मैच डिलेड बाय रेन। मैंने कहा ठीक है, मैच डिलेड है, अभी वैसे भी स्टार्ट होगा और सब कुछ होगा इतनी देर में, 1 घंटे की आराम से मैं और सो सकता हूँ, बिकॉज मैं लेट बहुत सोया था कल। तो लाइक ठीक है, सो जाता हूँ। फिर मैं उठा, मैंने उस पर देखा, न्यूज़ पे मेरा उस पर था, डैशबोर्ड पे, फ़ोन पे, व्हाटएवर इज कॉल्ड। उस पर लिखा था सिराज हिस्टोरिक 4 विकेट्स। ठीक है, हो सकता है 2 3 4 ओवर में लिया हो, कुछ लिया। मैंने क्रिक इन्फो खोला, मैंने देखा श्रीलंका वाज समथिंग लाइक व्हाट 20, 12 for 5। नॉट इवन 28, 12 12 फॉर 5, सॉरी, हाँ 12 फॉर 5। 12 फॉर 5, मैंने कहा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, और फिर मैंने सिराज के देखा 4 विकेट्स। ये एक सेकंड, ये हो क्या रहा है? और फिर उसके बाद एकदम से स्क्रीन पे आता है विकेट सिराज, 5th विकेट। यार ये कर क्या रहा है भाई आज? और मैंने जब मैच खोला लाइव स्ट्रीम देखने के लिए, मैंने कहा यार ये क्या हुआ? मैं तो लाइव होने वाला था आज। मैंने कहा चलो आज इंडिया पाकिस्तान, नॉट इंडिया, इंडिया श्रीलंका फाइनल है, लेट्स गो लाइव, थोड़ा एंटरटेनिंग होगा, कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। और मैंने कहा यार जब तक मैंने मैच देखना शुरू किया मैच ही खत्म हो गया, तो लाइव ही क्या करना है? बट द वे दिस गाय बॉल टुडे वाज इनक्रेडिबल। 3 की इकोनॉमी, 6 विकेट, 7 ओवर्स में, उसमें से भी 4 वो भी एक ओवर में लेना। आई थिंक मैं कल रात को बैठ के बहुत सारे जोक्स लिख रहा था कि इंडिया का टॉप ऑर्डर एक एक पार्ले जी बिस्किट की तरह कोलैप्स किया है, या केएल राहुल ने ये किया है। मैं कल जोक्स लिख रहा था कि यार ये चीज़ें मुझे बोलनी है अब, क्योंकि इंडिया ऐसे करेगी। और फिर मैंने जब सुबह खोल के देखा, मैंने कहा यार ये तो, इसमें तो कुछ बोल भी नहीं सकती इंडियन टीम है। क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, वो भी श्रीलंका को श्रीलंका में हराना इज नॉट एन ईजी टास्क। श्रीलंका के अगेंस्ट जितनी भी टीम से खेला है एशिया कप में, रिलेटिवली लोअर लोअर साइड पे रहा है सबका स्कोर। पाकिस्तान हुई, बांग्लादेश हुई, जिसने भी खेला है रिलेटिवली स्कोर्ड अ लॉट लेस देन, लेट्स से, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 330 बनाए, श्रीलंका के अगेंस्ट 212 था, या 213, समथिंग लाइक दैट। तो समवेयर आई थॉट कि इंडिया थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली होम कंडीशन है श्रीलंका के लिए। बट टॉस हारना कहीं ना कहीं इट वर्कड आउट इन द फेवर ऑफ इंडिया। एंड गुड टॉस as टू a यूज। as an exactly as an Indian perspective, you can't really complain from this। और इसमें आपको कह भी नहीं सकते कि ये चीज़ इंप्रूव हो सकती थी, ये चीज़ बेटर हो सकती थी। तो भाई क्या 50 रन का टारगेट था। इट इज अनहर्ड ऑफ। इम्प्रूव हो सकती थी यार, वो जो कोहली ने ओवरथ्रो का चौका फेंक दिया शायद 46 होता है। ये इम्प्रूवमेंट हो सकता था और तो। वही एक इम्प्रूवमेंट है बस। और उसपे भी वो जो जिस तरह से वो भाग रहा था पीछे उसके, मोहम्मद सिराज, वो हाँ बड़ा भाई फनी लगा स्प्रिंट मुझे। मार रहा था ईशान के साथ। एग्जैक्टली। हाँ। तो यार इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया। आई मीन यू कांट रियली फॉल्ट एनीथिंग जो इंडिया ने किया इन एनीवेज। बट श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यार बहुत सरप्राइजिंग होगा। और समवेयर व्हेन दे मस्ट हैव ऑल गॉटन टू देयर ड्रेसिंग रूम्स, एंड जैसे कि उनके कोच ने कहा कि दे विल असेस इट टुमारो वंस द इमोशंस आर काइंड ऑफ withered away, they're back to being the Sri Lankan team. It it will come as a huge shock, ह्यूज शॉक। पहली बात तो मैं तो श्रीलंका को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फाइनल तक पहुंचने में, क्योंकि उनके काफ़ी की प्लेयर्स मिसिंग थे। तो मुझे हमेशा से लगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस लैकिंग है, कुछ यंग प्लेयर्स हैं। बट उन्होंने बहुत फियरलेसली खेला और फाइनल तक आए, वही एक उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे हिसाब से। इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब सिराज कभी कभी ऐसी चीज कर जाता है ना कि मतलब वी समहाउ कांट इमेजिन। मतलब आप देखो, इफ यू सी
अभी श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, दैट थ्रिलर गेम, कितनी आराम से दे प्लेड शाहीन शाह अफरीदी. शाहीन शाह अफरीदी इज अ मच हाई रेटेड बॉलर देन हम्म आपका सिराज. बट एंड सिराज के अगेंस्ट दे वर लाइक क्लूलेस. एंड सिराज, लाइक जितनी तारीफ करो उतनी कम है, द वे ही वाज सेटिंग अप. if we see the wicket of उनका कैप्टन जो है शना का, उसने 3 आउट स्विंगर डाली. एंड फोर्थ वन शना का वाज एक्सपेक्टिंग कि एक इन स्विंगर डालेगा, उसने ऑफ स्टंप पे आउट स्विंगर डाल दी एंड वो लेग स्टंप की लाइन पे खेल गया. एंड ही वाज क्लीन बोल्ड, मतलब द क्लीनेस्ट ऑफ बोल्ड्स दैट आई हैव सीन इन अ व्हाइल. तो मतलब जितनी तारीफ करो, उस बैट्समैन को सेटअप किया. एंड just on the point of Sri Lanka, I felt very bad for the Sri Lankan fans because पूरा हाउसफुल था. It was a Sunday. They actually showed match के beginning में कि people were waiting outside, in queues. And on a lighter note, जब तक वो अंदर आए भी होंगे तब तक श्रीलंका की बैटिंग खत्म हो चुकी थी. So I don't know, like यार, मतलब I felt very bad for them. And like they were even like जब 50 हुआ तो they were cheering. So that was the only thing that cheered for, I believe. नहीं, बिकॉज ये तो एक ऐसी परफॉर्मेंस हुई ना, ये वही हुआ जैसे इंडिया ने टेस्ट मैच में वो जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 37 पे ऑल आउट हुए थे जिसपे 36. ये, हाँ. हाँ, ये वही वही सिचुएशन हो गई क्योंकि एज अ पहली बात तो ठीक है, आप अगर टूर्नामेंट ओपनर है, वार्म अप गेम है, तो आप इसमें ये सब कुछ एक थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर भी सकते हो कि 1% चांस है या 0%, 0.5% चांस है. बट एक फाइनल पे आके यू डोंट एक्सपेक्ट अ टीम लाइक श्रीलंका और एनी अदर टीम टू कोलैप्स द वे दैट दे डिड टुडे. और it just goes to show the quality Indian bowling possesses and the Indian team possesses, to be able to Absolutely. knock down Sri Lanka the way they did. And it just goes to show कि पेपर पे सिर्फ ये नहीं है कि भाई कोहली है, रोहित शर्मा है, केएल है, सिराज है, शामी है, बट ये फील्ड में भी ये लोग दिखा सकते हैं. बट कहीं ना कहीं समवेयर वही होता है कि नॉकआउट गेम्स में एक बैड परफॉर्मेंस हो जाती है, फिर वो कंटिन्यू होता है, फिर वो कंटिन्यू होता है, और फिर टूर्नामेंट्स भी इतनी जल्दी जल्दी आते नहीं है. एवरी 4 years एक वर्ल्ड कप होता है. देखा जाए तो टेक्निकली इंडिया हैज़ ओनली लॉस्ट 2 games इन द लास्ट व्हाट 8 years in knockouts in World Cups. But वो 2 losses result to almost 8 years of agony and 8 years of struggle to get back into the next Absolutely. rhythm and play again. So somewhere you look at it and you go, maybe something India should look at as well. But moving on from the discussion of India Sri Lanka, because realistically, as a as a पॉडकास्ट हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते इसमें, क्या ही बोले. एक इसका डिस्कशन मैच की तरह छोटा ही एक है. एक चीज मैं जस्ट और डिस्कस करना चाहूंगा. हम्म. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हार्दिक पांड्या. एंड नॉट जस्ट दिस गेम, आई थिंक थ्रू आउट द एशिया कप, ही इज लाइक, उसकी बॉलिंग, आई डोंट नो इफ he'll agree, but he is very close to Siraj in terms of the way he bowls and the way he swings the ball in both the directions. एंड शुरुआत वो करता है 125 130 से, बट आफ्टर 2-3 ओवर्स ही रीचेस टू 140 टू 145. सो अगर उसकी फिटनेस बनी रहती है तो आई मीन ही इज वेरी क्लोज. आई मीन मे बी बैटिंग के मामले में बेन स्टोक्स इतना अच्छा नहीं है, बट बॉलिंग के मामले में इज मच बेटर देन बेन स्टोक्स. सो ही इज अ जेम ऑफ एन ऑलराउंडर दैट वी हैव. सो मेरी तो भाई यही रिक्वेस्ट है हमारी जो फिजियो है और ये जो मेडिकल टीम है कि भाई अय्यर के साथ तुमने क्या किया मेरे को नहीं पता, बट हार्दिक पांड्या के साथ कुछ नहीं होना हाँ. चाहिए अगले 2 महीने. बिकॉज ही इज लाइक लिटरली जेम ऑफ अ गाय. जो स्विंग उसको हो रही है ना, मतलब हम्म. ही इज लिटरली swinging like, I mean, bowling like, seeming like Siraj and swinging like Bhuvneshwar. So मतलब मजा आ गया पांड्या नहीं, को देख बहुत के. की The है way हम he लोग के लिए. cleaned up the tail today. हम लोगों ने आई थिंक लास्ट वीक भी ये डिस्कशन किया था, या मैंने किसी और के पॉडकास्ट में जाके ये डिस्कशन किया था कि हम लोग सोच रहे थे कि व्हाई डू इंडिया प्रेफर टू पिक, जैसे हार्दिक पांड्या तो होता ही है लाइनअप में, बट शार्दुल ठाकुर को भी हम लोग ले आते हैं क्योंकि वो भी एक मीडियम पेसर, एक ऑप्शन मिल जाता है हम लोग को. और हम लोग वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप होने वाला है, देर विल बी अ हायर चांस कि हार्दिक पांड्या तो रहेगा टीम में, बट शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर आ जाएगा या कोई और ऑलराउंडर आ जाएगा जो बैटिंग कर सकता है. ऑब्वियसली वी नो द स्किल्स वॉशिंगटन सुंदर पोजेसेस, और इसीलिए शायद फाइनल में भी उसको फॉरन लिया आए थे अक्षर पटेल की जगह. दे न्यू के स्पिन पिच होगी, बट ऑब्वियसली पेसर्स ने ज्यादा विकेट्स लिए उस दिन, एंड स्पिनर्स को चांसेस ही नहीं मिली, सिराज ने जिस तरह से कराया. बट समवेयर यू न्यू के वॉशिंगटन सुंदर इज गोइंग टू बी की एज वेल. एंड इंडिया ने जो वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस करी है, इसमें शायद दैट्स व्हाट आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज अबाउट कि शार्दुल ठाकुर को फेवर किया हुआ है. एंड फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर इंडिया के पास वो नहीं है वॉशिंगटन सुंदर उस स्क्वाड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So that was some one discussion that I had with someone, and I was like, yeah, this could backfire because they need an all-rounder. वो शार्दुल ठाकुर को सिर्फ इसलिए रखते हैं कि भाई हम लोग के पास 8 नंबर पे एक बैट्समैन है, क्योंकि
दे वांट टू मेक श्योर कि भाई बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, बट उसमें कहीं ना कहीं दे लूज आउट ऑन बीइंग एबल टू प्ले वन मोर स्पिनर, और वो स्पिनर जैसे जडेजा एक ऑलराउंडर है, वैसे ही एक वॉशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर एक ऑप्शन मिल सकता है इन लोग को। आई एम लुकिंग एट द स्क्वाड अगेन, है नहीं। So, which is something that we kind of discussed about, but obviously we'll do the World Cup discussion a lot closer to the World Cup once we do a team review kind of session. Once all the teams announce their scores, I think Pakistan और श्रीलंका ने भी अनाउंस नहीं करी, और एक दो और टीम्स हैं जिन्होंने नहीं करी अभी प्रॉपरली अपनी स्क्वाड अनाउंस। इंग्लैंड ने भी सिर्फ प्रोविजनली स्क्वाड अनाउंस करी है। टॉकिंग अबाउट द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन ऑफ द Asia Cup, I think generally, if I was to speak about batsmen, I would say KL Rahul, Virat Kohli probably would get the award for that in terms of batting. मेरे लिए तो Gill as well. I think हम्म most runs Gill के ही हैं, but हाँ in terms of impact, I think Gill वाला मैच तो हम हार गए थे जिसमें he scored 100. हम्म But that Kohli and Rahul wala match, the Pakistan game, that really brought momentum to it, because on paper और जितना भी हम लोग we outsiders were making noise कि हमारी टीम कितनी बेकार है, they showed us नहीं भाई we are a great team. तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. So I would say yes, from India's point of view, Kohli, Rahul and Gill to an extent. and Kusal Mendes as well for me. You know, उसने भी बहुत काफी अच्छा For खेला. yeah, absolutely. 270 runs, average of 45 in 6 innings is quite an impressive average for a team which I think lacked a lot of their first first team bowling. So they had to kind of fight it out with batting well as well. So Kusal Mendes as well, credit to him for the way they kind of did it. And then in terms of all rounders, मेरे हिसाब से मैंने तो कोई ज्यादा नोटिस नहीं किया किसी को. I'm just trying to think if I'm missing out on someone. Probably हार्दिक पांड्या, because उसने बॉलिंग बैटिंग दोनों करी. थोड़ा बहुत पाकिस्तान के फर्स्ट गेम में हेल्प किया जिसमें वॉश आउट हुआ Vela, था. Vela Lage, and I think हम्म, this हाँ guy, विला लगे हाँ. Iftikhar Chachu, he's good. या Uh, Asalanka is also fine. थोड़ा सा spin करा लेता है, but yeah, I mean, standout would be Pandya and Vela Lage, I would say. Ulalage, I think for me is like the young player of the Asia Cup for me, क्योंकि उसने जिस तरह से Yeah. सरप्राइज किया सबको, and not just with the ball but no, and as well as with the bat. And I think I'm really impressed with him, and उसकी IPL की सिलेक्शन तो हो गई है, because कोई ना कोई टीम तो ले ही लेगा इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे, चाहे वो अगले 2 साल कह रहा हूँ, अगले साल तक कुछ ना करे, इसकी इसकी सिलेक्शन तो हो गई है. बट क्रेडिट वेयर इज ड्यू बॉलिंग में. आई थिंक इन जनरल पाकिस्तानी बॉलर्स को मैं थोड़ा हाइप देना चाहूँगा इधर, क्योंकि आई थिंक दे बॉल्ड रियली वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट. इट वाज जस्ट अनलकी कि वो श्रीलंका के अगेंस्ट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, जो वर्चुअल सेमीफाइनल गेम कह लो उसको, सुपर फोर में. इट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग. एंड ऑब्वियसली इंजरी हिट, जब इंजरीज हिट होती है इतनी सारी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह टू, इफ यू कीप मेन बॉलर्स, मे बी द whole scenario would have been different against Sri Lanka. So credit to them as well. And then obviously the Indian bowlers, or even though Rohit Sharma might not agree with me saying that Indian bowlers ने Pakistani bowlers की तरह अच्छी bowling कराई, I would still put them up there and say कि हाँ इन्होंने अच्छी करी है. But still, I mean, I know we'll do the World Cup preview later in a video, but I would say Pakistan के लिए बहुत सारे concerns हो गए हैं with Naseem Shah, and I don't know Hmm. Haris Rauf will he play in the World Cup or not, but जहाँ तक reports मैंने पढ़ी, Naseem Shah is surely out for at least quite a few games, so it's a big blow, and let's see if भाई वो तो Pakistan is a pace factory, so I would not say कि they won't come up with a new talent, but I mean, they have a lot to, and just a bit on Babar'S, I think, yeah. If I don't know if you saw that video, जिसमें वो उनका जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, क्या नाम है यार उसका, जो कोहली से Uh, अ, साइन कोहली शाह. से जो नहीं नहीं, जो डोपिंग के लिए, ओ सॉरी, मैच हाँ फिक्सिंग के मोहम्मद लिए जो आमिर. इंग्लैंड में, मोहम्मद मोहम्मद आमिर, आमिर, हाँ, या. उसका एक वीडियो आया था जिसमें पाकिस्तान का जर्नलिस्ट उससे पूछ रही है कि भाई व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बाबर आजम बीइंग रैंक्ड वन, एंड ही सेड दैट भाई देखो ऐसा है, जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो तो रेस्ट कर दिए जाते हैं नेपाल और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, हमारे जो हैं ये सिर्फ नेपाल और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही 100 मारते हैं, तो हाउ कैन, आई डोंट बिलीव इन रैंक वन. सो आई थिंक बाबर हैज अ लॉट टू प्रूव, इन एज अ कैप्टन तो ही हैज टू प्रूव अ लॉट, बट एज अ बैट्समैन एज वेल, आई थिंक he has to come up with some great performance against top teams. So Babar Azam has to prove that he's actually King Babar and not just like another हाँ, batsman. I think I completely agree with you on that, because आई थिंक जनरली उसका, ठीक है नेपाल के अगेंस्ट आपने एक सेंचुरी मार दी, बट उसके बाद कोई एक असर्टिव स्कोर नहीं रहा है. 29 अगेंस्ट आई थिंक वाज इट श्रीलंका,
इंडिया के अगेंस्ट भी बहुत ही अर्ली आई थिंक 3-4 रन बना के बस आउट हो गया था. तो समवेयर आई रियली डू एक्सपेक्ट हिम टू शो अप फॉर पाकिस्तान. और रियलिस्टिकली बोलूँ, there's been a lot of talk on the Pakistani camp कि यार बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इतना एग्रेसिव नहीं है वो, मे बी इज़ नॉट एज वोकल एज अ कैप्टन शुड बी, और मे बी उसकी परफॉर्मेंसेज पे इफेक्ट आ रही है. मुझे कहीं ना कहीं लगता है पाकिस्तान में भी कोई और मुझे कैप्टन दिखता नहीं है. एंड it's pointless to say कि someone like Shaheen, someone like a youngster can come in and take up the captaincy, because वो ऐसे चल नहीं पाएगा वहाँ पे. आई थिंक रियलिस्टिकली अगर कोई कैप्टन है अभी तो बाबर आजम ही रह पाएगा. मे बी मोहम्मद रिजवान, यू कैन थिंक अबाउट हिम बीइंग अ कैप्टन, वो भी सीनियर प्लेयर है, वो भी काफ़ी सुलझा हुआ प्लेयर है. बट आई वुडंट टेक द कैप्टनसी अवे फ्रॉम हिम इन टर्म्स ऑफ बाबर आजम. और सेकेंडली, यू राइट ऑन सेइंग कि उसको अब एक ऐसा टाइम है उसके करियर का जहाँ पे उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्कोर कर सकता हूँ, मैं इंडिया के अगेंस्ट कर सकता हूँ. एंड वो इट ऑल गोज बैक टू, मेरे मेरे ओपिनियन से इट ऑल गोज बैक टू पाकिस्तानी प्लेयर्स नॉट बीइंग एबल टू हैंडल द प्रेशर. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जैसे इंडिया ने 330 बोर्ड पर, दे स्कोर 230 और 330 ऑन द डे. वो मेंटली पाकिस्तान जब ड्रेसिंग रूम में जाती है बॉलिंग के बाद, वो वहीं पे गेम हार जाते हैं. वो कहते हैं भाई 330 तो बनना नहीं है हम लोग से, जो बन सकता है वाके बना लो. एंड दैट इज वेयर दे लूज द गेम. और वही इंडिया ने किया. वो मेंटली वो रन्स ब्लॉक कर रहे थे एंड वो इवेंचुअली विकेट्स मिल रहे थे इंडिया को. व्हाट श्रीलंका शोड द अदर डे कि भाई टू आपने 250 प्लस 260 स्कोर बनाया है. इट्स अ टफ स्कोर, इट्स नॉट एन इजी स्कोर, बट वी विल पेस आवर इनिंग्स. विकेट्स भी जा रहे थे, ऐसा नहीं था. श्रीलंका वो स्ट्रगलिंग, बट एट द सेम टाइम उनको पता था कि भाई हम लोग को आके धीरे धीरे खेलना है, एक एक दो दो रन. बहुत से ऐसे ओवर थे जहाँ पे सिर्फ उनको 2 रन मिलते थे, 3 रन मिलते थे फॉर 5-6 ओवर्स इन अ रो. लेकिन फिर उसके बाद वो आ जाते थे, एक ओवर में 10-15 रन बना के वो एवरेज कर लेते थे. सो दैट इज समथिंग पाकिस्तान रियली नीड टू वर्क ऑन. आई थिंक जो मैंने इस ईयर नोटिस किया है इन जनरल एज अ टीम, नॉट जस्ट फॉर बाबर आजम. अगर बाबर आजम की बात करूं तो मैं कहूंगा कि भाई तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है 100 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलने की, 80 प्लस खेलने की. भाई तुमसे नहीं खेला जा रहा, 50 खेलो, बट वो रन्स बनाओ पहले. फिर जब आप एक बार 50 की स्ट्राइक रेट से आप 50 रन बना लोगे, 60 रन बना लोगे, वो ऑटोमेटिकली आप उसको फिर कॉन्फिडेंस आएगा, 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और वो बिल्डअप करो आप. एंड यूज That's a दोज नेपाल गेम्स, अफगानिस्तान गेम्स टू मे बी बिल्ड अप योर काइंड ऑफ इनिंग्स इन कॉन्फिडेंस. that's a great point. अब मुझे याद आता है 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल. सचिन ने, I think he took 120 deliveries to score that 80, but that 80 was priceless because it was a pressure game. And strike rate वाली उसका 65 था, but India was able to put 270 against Pakistan, and they had to chase it and they couldn't. So that's a great point that you're saying. You don't think about strike rate, think about getting runs. That's how legends have succeeded in the past, and that is the recipe that you should take. मेरे हिसाब से अगर अगर पाकिस्तान को कुछ अचीव करना है तो उनको बस वो प्रेशर, इनके इनके साथ प्रेशर का बस सिचुएशन है. दे नीड टू रियली वर्क ऑन देयर प्रेशराइज अंडर प्रेशर कंडीशंस एंड वर्क ऑन दैट. वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा. एंड वो मेंटली जब आप गेम हार जाओगे तो वो जितना भी आपने स्किल्स कराओ, जितना भी आपने प्रैक्टिस कराओ, वो कोई फ़ायदा नहीं आने वाला उस दिन. सब कुछ फिर वो उल्टा सीधा ही होगा. तो समवेयर दे रियली नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल. फॉर पाकिस्तान, श्रीलंका भी as well to a certain degree, but we can't really say much. Pakistan के against काफ़ी अच्छा performance किया था. Talking about some of the other teams who may have left the competition a lot earlier, I guess Bangladesh, Afghanistan, and Nepal as well. They've I think Bangladesh played well. मैं तो expect नहीं कर रहा था. मुझे लगा था Afghanistan may have easily gotten through into the round of Super 4 comparatively, but Bangladesh showed up. Shakib Al Hassan, obviously the most reliable Bangladeshi player out there as well, for the Yeah. legend. उसने भी काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी अच्छी इनिंग्स करी. Obviously not enough to take them to the final, and Bangladesh has always been that kind of team जहाँ पे एक दो प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं और फिर बाकी सारे होते हैं. और you the whole nation kind of expects players like Mustafizur Rahim या शाकिब अल हसन to kind of carry the whole team. वो हो नहीं सकता क्रिकेट में. I think फुटबॉल में तो फिर भी आप सोच सकते हो कि some players are reliable enough कि आप उनसे कह सकते हो कि भाई अगर मैंने इसके अराउंड टीम बनाई तो ये टीम फाइनल तक जा सकती है. क्रिकेट में आपको इंडिविजुअल्स चाहिए जो अपनी पर्सनालिटी दिखा सके, स्कोर टीम के लिए स्कोर्स कर सकें, वेदर इट्स विद द बॉल, वेदर इट्स विद द बैट एज वेल. तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है उन सब के लिए एज वेल. टू But to टू be like kind of fair with Bangladesh, ठीक है, I think they had a bad start to Super 4, but that win against India will boost their confidence for sure. Because India are the Asia Cup winners now, and they'll have that in their mind कि भाई we defeated Asia Cup winners. And given the World Cup is in India, I don't think it'll be easy for SENA countries to if Bangladesh can if some at least
two or three more batsmen step up other than Shakib. So I think because bowling unki utni buri nahi hogi in Indian conditions. It's just about if they can, score those 300 plus runs, then they'll be able to. I think इतना आसान नहीं होगा सेना countries को इनसे पार पाना. So and they have done it in the past. I think England को हरा चुके हैं वर्ल्ड कप में पहले. So and I think पाकिस्तान या इंडिया को ही हराया था यार 2007 में. So बाहर ही कर दिया था. So आई थिंक इंडिया ने सिर्फ बांग्लादेश को एक ही बार हराया इन द लास्ट 5 games या समथिंग लाइक दैट. दिस इज वन टीम yes. विच इज बिन इंडिया क्रिप्टोनाइट, जिसमें सिर्फ इंडिया एक ही बार जीत चुके हैं. और वो भी मुझे जहाँ तक याद है, आई कांट रिमेंबर द टूर्नामेंट, बट किसी एक में सिर्फ हारे जीते हैं इंडिया. बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बांग्लादेश डू एंड अप विनिंग अगेंस्ट इंडिया इन इंडियन कंडीशंस एज वेल एज इन फॉरेन कंडीशंस. So you're talking about all the like all this आई kind of series थिंक आई bilateral थिंक or मैं so मेजर मैचेस की बात bilateral कर रहा हूँ. अभी. मैं हाँ. इन टर्म्स ऑफ उसकी बात कर रहा हूँ, बिग टूर्नामेंट्स. सो वेदर इट्स अ T20 वर्ल्ड अच्छा कप big. या 50 ओवर वर्ल्ड कप वाले, उसमें Okay. बांग्लादेश का रिकॉर्ड हमेशा इंडिया के अगेंस्ट सरप्राइजिंगली अच्छा रहा है. तो एक वो वाला जीते थे, इफ यू रिमेम्बर, जो ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ था, उसमें लिटन दास वाज डीएल मेथड से रिड्यूस हो हम्म. गया था एंड लिटन दास वाज हैमरिंग एंड समहाउ इंडिया वन बाय आई थिंक 5 or 6 रन्स इन द एंड. हम्म. वो जीते थे. सो आई वो थिंक था, दैट हाँ. इज द वर्ल्ड हाँ. कप. Anyways, वी हैव moving on from गॉट the इन हिस्ट्री. Asia Cup conversation, there's a lot of cricket going around as well. सब लोग ODIs खेल रहे हैं. I think इस वक्त तो any team is just trying to pick any team to play ODIs with, and that's what's happening with South Africa and Australia. What a series that has been so far. South Africa winning the last game, winning the series 3-2, showing Australia what they are capable of as well. Surprisingly, because पहले 2 मैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे डोमिनेट किया था, इतने हाई स्कोर्स बनाए थे. मार्नस लैबुशेन एज वेल, नीड टू कॉल हिम आउट देयर एंड से व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिम. वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने के बाद भी ऐसी परफॉर्मेंसेस करना is great to see as well. And even in the last game as well, 44 of 63. But South Africa has shown, that they are also capable of doing something. And जहाँ तक मुझे पता है, साउथ अफ्रीका को मैंने इतना अटेंशन नहीं दिया जितना शायद आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड आर गिविंग. बिकॉज मुझे भी वही वैसे ही बांग्लादेश वाला सिनारियो लगता है, जहाँ पे 2-3 ऐसी टीमें हैं, 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा कैरी करना पड़ता है. बट एट द सेम टाइम एक अच्छी स्क्वाड बन रही है उनके यहाँ. डेविड मिलर है, एडन मार्क्रम है, क्लासन 173 इन 93 बॉल्स इज क्या इनिंग्स थी. मैंने उसकी हाइलाइट्स देखी बाद में. टेम्बा बुमा एंड देन क्विंटन डिकॉक एज वेल इज इन फॉर्म. तो समवेयर उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि दे माइट हैव स्पन इट अराउंड हियर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विल स्ट्रगल, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अब जो इंडिया आएगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो कम होगा ही उनका. और अभी 3 मैचेस हैं उनके इंडिया के साथ. इन द मीन वाइल इंग्लैंड आर प्लेइंग अगेंस्ट, if I'm not wrong, न्यूजीलैंड. वो भी बहुत अच्छी सीरीज जा रही है. बोथ इंग्लैंड won 3-1, but Australia and New Zealand as well have been fighting it out as well. And David Milan, the guy who's been keeping England hopes alive. तो क्या opinions हैं ऑस्ट्रेलिया पे, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में? Obviously these are not Indian conditions, subcontinental conditions, but if anything's, it is ODI So practice at least. about South Africa, I would say कि very satisfying. Why? Because all the points that you mentioned, plus the fact that their batting is clicking, not the bowling. Because अभी the match is happening in South Africa. So अगर वो ऑस्ट्रेलिया को आउट करे ले रहे हैं 200 पे, तो that is not a big deal. Because वो वहाँ के महारथी हैं. I have seen a lot of games जिसमें टेस्ट में उन्होंने 40-45 पे निपटा दिया टीमों को in South Africa. The fact that their batting is clicking in those conditions is very promising, because India में there will be high scoring games. And as you said, almost their entire batting order is in form right now, which is great. So kudos to South Africa. We were just thinking there are 4 teams that could potentially compete, but I think now at least 6 teams are there that can actually challenge for semifinals. So great for the game, great for the World Cup, great for the competition. Australia, yes, a lot to worry about. पहले मैच में तो अच्छा खेले, but in the next 3 games their batting kind of crumbled. So let's see. अभी ऑस्ट्रेलिया का तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा in the 3 games that are coming up against India. And yes, England, New Zealand, I think, yeah, I mean, those are like both of them are good. Uh, in New Zealand, obviously, the World Cup team. I mean, they are known for their World Cup skills. And England with Ben Stokes back in the team, brilliant. I think
ready for the World Cup. Let's see क्या होता है. अगर मैं साउथ अफ्रीका की कोई अगर कोई खामी, if I have to mention one and say that maybe this is something they might need to work on, is the fact that obviously South African conditions are very favorable to fast-paced bowlers, and that's how it's always been. So they've taken a lot of advantage from that as well. Marco Jensen played quite well in the last game, and Gidi has been bowling well in the last few games as well. So somewhere they might the area they might struggle in India would be the spin options. Maharaj to hai obviously इनके पास, but they might need one or two more proper spinners, not just the halftime spinners to come in and bowl a few overs, but That's you a need great at point. least 20-30 overs of spin in a 50 over game, and to be able to control the opposition. क्योंकि पता लगा you're playing in a pitch like Chennai जहाँ पे someone like Siraj, Bumrah ये लोग विकेट नहीं ले पाते, जबकि ये लोग बहुत ज़माने से खेलते हैं इन सब विकेट्स में. So expecting Ngidi या Jensen या anyone else to come in and pick up those wickets would be kind of a weird And expectation to have from them. and now that you say that, and now I feel कि even their batsmen, I don't know ऑस्ट्रेलिया के तरफ से कितने spinners खेल रहे थे. So I don't know how, if their batsmen have been tested again enough against spinners on spinning conditions. So वो तो खैर practice match में तभी काफी पता चलेगा. I think at least in India, Hotstar पे for everyone's knowledge, all the practice matches will be uh, telecasted. So do check those games. Very important for prep of teams and understanding कौन कितना पानी में है. So yeah, India के भी एक I think England से है और एक Netherlands से है. So both of them will be telecasted. So yeah, looking forward. That'll be a good period for teams to test out their kind of squads and see how it goes over there. England की जो अभी अभी न्यूज़ आई है कुछ देर पहले, Harry Brooks coming back into the squad is a big kind of deal as well, because I think I felt sorry for him जब उसको निकाला गया था बेन स्टोक्स की वजह से. मुझे थोड़ा बहुत ये लगा था कि यार ठीक है, बेन स्टोक्स is a great player, but you don't discourage a youngster and just remove him from a World Cup team, even though उसके performances have been very above par for anyone to have him in their squad for the World Cup. तो I बट think वो एट द सेम टाइम मुझे लगा था कि ऐसा होप होगा कि यार एंड में जाके वो ले ही लेंगे हैरी ब्रुक्स को भी, बिकॉज ऐसा तो नहीं करेंगे कि यार उस बंदे ने क्या गलती क्या करी है जो उसको बेन स्टोक्स की वजह से हटा दिया. बट आई थिंक इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ अगेंस्ट न्यूजीलैंड दे वांटेड बेन स्टोक्स टू प्ले एंड टू हैव दैट काइंड ऑफ रन इनटू द ओडीआई फॉर्मेट, क्योंकि ऑब्वियसली उसने खेला नहीं है बायलैटरल सीरीज लास्ट फ्यू ईयर्स से, और he's the only thing he's kind of the only white ball cricket he's been playing is kind of the T20 games in the IPL and a few for England as well. So happy to see him back. Hopefully and उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है हैरी ब्रुक्स का इंडिया में. तो आईपीएल में क्या जबरदस्त खेला था वो लास्ट टाइम. It's and I something that think a lot of एक 7 मैच सीरीज पाकिस्तान में हुई थी ना जब इंग्लैंड की आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट टू हाँ. लास्ट ईयर उसमें भी ही वाज द स्टैंड आउट हिटर हम्म. जितने भी रन बनाए थे उन्होंने. सो हैरी ब्रुक्स डेफिनेटली और आई थिंक दे विल पिक अप सॉल्ट एज वेल. सो आई थिंक सो एंड अब भाई इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर पे तो आई थिंक एक अलग वीडियो बन सकता है. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. दे आर लाइक मुझे तो डर लगता है करंट इंग्लैंड बैटिंग ऑर्डर को देख के. सही में आई थिंक इंग्लैंड की जितनी आई थिंक डामाडोल बॉलिंग है उतनी ही ज़बरदस्त बैटिंग है. एंड वही होता है ना कि जैसे आपको कभी कभार एक बैलेंस टीम चाहिए होती है, कि आपको बॉलर्स भी चाहिए बैटर्स भी चाहिए, और कुछ कुछ ऐसी टीम्स होती हैं लाइक इंग्लैंड जो बॉलिंग में भी उनकी अच्छी ना हो, बट जब ऑपोजिशन 250-260 मारेगा उनके पास बैट्समैन इतने अच्छे कि वो भाई 30-40 ओवर्स में वो चेस डाउन कर जाएंगे. इंग्लैंड एक ऐसी बिग हिटिंग टीम है कि अगर कोई ऑपोजिशन 330 भी स्कोर करता है ना, वो भी एक tough target होता है for the team who has scored it to defend. Someone like India would find 330 in my opinion tough to defend against England, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी एब्सोल्युटली. एक्सप्लोसिव है. एंड इट्स नॉट लाइक कि एक दो प्लेयर्स हैं जो सेंसिबली खेलते हैं. आई वुड से कि थोड़ा लाइक 100 की स्ट्राइक रेट से या 100 की कम सी स्ट्राइक रेट से फिल सॉल्ट है, डेविड मलान है, जेसन रॉय है. बट उसके बाद जो इनके जो बिग हिटर्स आते हैं ना, जैसे बेयरस्टो है, हैरी ब्रुक्स है, बेन स्टोक्स है, एंड व्हाट्स कॉल्ड द कैप्टन, I've just forgotten his name suddenly. England captain. How have I forgotten his name? I can't बटलर remember. नहीं. बटलर, जॉस बटलर. तो वो जो एक्सप्लोसिवनेस है ना, कि वो ऐसे लोग हैं जो 30th ओवर में भी आके अगर 200 रन चाहिए होंगे तो वो इतना मुश्किल नहीं है उनके लिए 20 ओवर में 200 रन बनाना लास्ट में. तो यू कैन नेवर रूल आउट इंग्लैंड एंड से कि हाँ बॉलिंग उनकी थोड़ी डिफिकल्ट है. एंड ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर हैज बीन रिटर्न एज वेल फ्रॉम इंजरी, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है. तो it could be dangerous, even though conditions are not favorable for fast-paced bowlers, but somewhere they will utilize him as well. और इंग्लैंड की स्पिन ऑप्शंस मुझे जहां तक पता है थोड़े स्ट्रगलिंग है उसमें. I can't राशिद remember.
I can't remember Moeen Ali Adil and Rashid. Adil Rashid as well. Yeah, so they're not entirely certain on किसके साथ जाना है Jack किसके साथ नहीं Leach जाना है. is one पर guy वो recommended तो me, but हाफ I don't वही know वही who. हो गया ना कि इट्स इज जैक लीच खेलेगा आई डोंट नो बिकॉज लिविंगस्टन करा लेता है थोड़ी स्पिन, मैंने मतलब जैक लीच ये को नो देखा नहीं है ओडीआई में इतना. हाँ हाँ, इज अ टेस्ट बॉलर. हम्म. लिविंगस्टन करा लेता है, इज अ गुड हाँ बैटिंग ऑर्डर. थोड़ा बहुत उसमें है. मोइन तो अली, या हैज ही रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई और विल ही प्ले ओडीआईस? नहीं आई थिंक ही इज स्टिल देयर. सो ही इज अ गुड ऑप्शन एज वेल. हाँ आई थिंक ही इज स्टिल देयर. तो या आई मीन इट विल बी इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली. मैं एक बात बोलूंगा जो मैं काफ़ी लोगों से कहता रहता हूँ, मैंने कहा यार ये वर्ल्ड कप काफ़ी क्लोज होने वाला है बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने प्राइम में हैं. बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका लास्ट वर्ल्ड कप है एंड दे रेडी टू गिव एवरीथिंग फॉर देयर टीम. वेदर इट्स कोहली, वेदर इट्स केन विलियमसन, बेन स्टोक्स ही कह लो या जो भी कह लो, सभी रेडी हैं खेलने के लिए. और ये इंडिया में पिचेस ऐसी होंगी कि कुछ बहुत से ऐसे अपसेट्स होंगे जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, और बहुत से ऐसे भी मैचेस होंगे जो बहुत ही वन साइडेड होंगे और एक टीम बहुत डोमिनेट करने वाली है. और वही बस है कि आई होप कि जो भी हो मैचेस अच्छे हों और एंटरटेनिंग हो बाय द एंड ऑफ द बारिश ना डे. हो यार. बारिश. आज रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पीछे से आवाज आई. आई थिंक वो काफी वायरल हुई थी मीम एंड आई वाज लाइक यार ये क्या बारिश हो रही है फिर से, बिकॉज आई थिंक उसका सेंटेंस था कि इट्स थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि बहुत से मैचेस एंड देन एकदम से वो पीछे से आवाज आने लगती है. तो मैंने कहा यार क्या पता है बारिश फिर से शुरू हो गई हो. मैंने कहा यार बारिश से भी डर लगने लगा है. मतलब किसी कभी मतलब नहीं कभी सोच. आज तो ऐसी हालत थी कि मतलब the Sri Lankan ground staff spent more time on the pitch than their batsmen. सीरियसली बिकॉज मैं कल यही मैंने कल जब वीडियो बनाया मैंने यही बोला. मैंने कहा यार प्लीज मुझे मैच संडे को शुरू होते हुए संडे को खत्म होते हुए देखना है. मुझे नहीं चाहिए कल इंडिया बैटिंग करे, परसों आके श्रीलंका बैटिंग करे, फिर पता लगा ट्यूसडे को ट्रॉफी सेरेमनी हो रही है और फिर वेंसडे को जा रहे हैं सब लोग घर. तो ये तो चाहिए ही नहीं है बिल्कुल भी मुझे 1% भी. सो या इट इज गोना बी नाइस टू सी. बट बिफोर द वर्ल्ड कप इंडिया प्लेज ऑस्ट्रेलिया होम में. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोनों टीम्स के लिए आई मस्ट से कि टू अंडरस्टैंड द ऑपोजिशन. डू यू थिंक दोनों टीम्स एक दूसरे से प्रॉपर स्क्वाड्स आएंगी या सेकेंडरी स्क्वाड्स आएंगी? कि ऑस्ट्रेलिया वुड नॉट मिस आउट ऑन द चांस. ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया तो वही स्क्वाड लेके आएगा जो वर्ल्ड कप में लेके आएगा. और मेरे ख्याल से तो पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, ये लोग सब वापस आ जाएंगे अब स्क्वाड में और ये लोग सब शुरू हो जाएंगे खेलना. बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी कौन मिस करेगा इंडिया में बॉलिंग की प्रैक्टिस करना. और कहीं नहीं मिल पाएगा ना ऐसा अपॉर्चुनिटी तो मैच कंडीशंस में. I think they'll come up with their full squad. बस यही है कि they'll shuffle around and play all the 15 that they potentially feel हम्म. कि will be in the squad. So ऐसा नहीं होगा कि they'll fix their 11 and keep playing. That doesn't make sense. That does make sense if they want to gel up the players, but I think they'll come up with their best squad. Unless there is an injury scare with any player, like in India, like we have those Bumrah, Pandya and सबका भाई ये बड़े delicate player हैं, कब injured हो जाए कुछ नहीं कह सकते. So India, I don't know if they will come out with all the best players, but Australia for sure they will, because they do want their best players to experience the Indian conditions right before the World Cup. आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन दैट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सीरीज के डिस्कशन पे कि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली पूरी अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड ही लाने चाहिए उनको अनलेस ऑब्वियसली कोई इंजरीज हो ऐसी जो जिस रीजन से कोई प्लेयर्स ना खेल पाए. बिकॉज दिस इज वंस इन अ ब्लू मून अपॉर्चुनिटी कि आप उसी कंट्री में जाके उसी कंट्री के अगेंस्ट 3 मैचेस खेलो जहाँ पे वर्ल्ड कप होस्ट हो रहा है. तो as much as England practicing at their home या कहीं पे भी बाहर भी, I think they're playing Ireland as well for three matches. साउथ अफ्रीका ने अभी ऑस्ट्रेलिया खेल के आया. तो इट डज हेल्प बट वो उस लेवल का कोई हेल्प नहीं होगा जो आप ऑब्वियसली होम वहाँ पे कंडीशंस में खेल के आओ. एंड एडमिटिंगली कि ठीक है उन ग्राउंड्स में मैचेस हो रहे हैं जहाँ पे आई गेस वर्ल्ड कप मैचेस नहीं है इतने. दे काइंड ऑफ गिवन इट टू एक तो पंजाब आई थिंक मोहाली में हो रहा है और दूसरा मेरे ख्याल से कहीं होलकर स्टेडियम समथिंग लाइक दैट एज वेल. तो ग्राउंड्स वेयर it's not where the World Cup's going to be hosted, but at the same time it's still subcontinental pitches. अगर 50% भी सिमिलर टू अहमदाबाद टू चेन्नई टू कोलकाता, इट डज गिव यू दैट एक्सपीरियंस. और इंडिया के लिए आई थिंक आल से के मे बी कुछ ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं ऐड इसमें जो एशिया गेम्स खेलने जा रहे हो, जो मे बी एशिया कप में नहीं खेले हों. और जैसे बुमराह की जो थोड़ा बहुत वो
एंकल में थोड़ी इंजरी रिपोर्ट हुई थी. It wasn't anything serious, but maybe you keep him out for a game or two to give him that rest, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले भी कुछ वार्म अप गेम्स हैं. इंडिया से बेहतर इंडियन कंडीशंस तो कोई जानता नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर समवन लाइक बुमराह, समवन लाइक शामी या सिराज नॉट टू प्ले इन इंडियन कंडीशंस. और अभी अच्छे से एशिया कप खेल के आए हैं, तो द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज रिस्क अ प्लेयर एंड से कि नहीं इसको खेलना है, और यू एक्सर्ट टू मच प्रेशर ऑन इट. मे बी के एल राहुल प्लेज इट, but at the same time ईशान किशन विकेट कीपिंग करे या कोई और विकेट कीपिंग कर ले. तो इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर इंडिया टू टेस्ट अराउंड एज वेल. एंड जहाँ तक बात क्रिकेट की आती है, आजकल क्रिकेट बस इतना ही चल रहा है. अब तो सब आईज आर ऑन द वर्ल्ड कप. तो इसके अलावा कोई और डिस्कशंस अनलेस आई एम मिसिंग एनीथिंग मेजर, मुझे तो कहीं लगता नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये यही क्रिकेट आजकल बांग्लादेश चल रहा है. और न्यूजीलैंड की सीरीज भी होने वाली है. दैट विल आल्सो बी इंटरेस्टिंग. 3 मैच की सीरीज है. इट विल स्टार्ट ऑन 21st एज आई सी ऑन क्रिक बस, एंड 26 तक चलेगी. सो इन बांग्लादेश कंडीशन, सो न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है. हम्म. बांग्लादेश कंडीशंस आर सिमिलर टू इंडियन कंडीशंस. Yeah, obviously that's going to be interesting to see as well. But yeah, that's where we're going to kind of end the podcast today. थोड़ा छोटा एपिसोड है, थोड़े कम डिस्कशंस है, बट जनरली मोर जनरल डिस्कशंस आज की हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप आने में भी कुछ टाइम है. एंड अब सारी टीम्स थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड चली जाएंगी, सब अपने अपने प्रिपरेशंस करेंगे अपने अपने कैंप्स में, तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. They've tried out every single squad member for the last 4 years. It's time to put in that kind of last push, whether it's India, whether it's Pakistan, anyone else, to hit the ground running and win the World Cup and take it home. Obviously, koi nation nahi aayega unprepared, so it'll be interesting to see how that happens. But make sure you tune in for the next week's episode. We're going to discuss a lot more in detail about the squads, as well as some of the other cricket related news. Jab tak jo bhi koi news aati hai, tab tak. And stay tuned in for a lot of meme reviews, a lot of these funny type cricket videos as well coming whenever games nahi ho. I'll make sure I have Suyash on for some of them as well. थोड़ा मजा आएगा उसमें करने में, थोड़ा different type of format for you guys to watch as well. But yeah, I'm going to end it on that note. Make sure you guys subscribe to the channel if you're watching it on YouTube. Make sure you add it to your playlist if you're watching it on Spotify or any of the audio platforms. It really means a lot. And just before I end it, I want to say thank you for the amazing support. I mean, it's been incredible. The comments, I read it on a daily basis. I may not reply to a lot of people, but I make sure that I reply to everyone who tries to be positive with me. मेरे लिए हमेशा से ये चैनल एक डिस्कशन चैनल रहा है सबके साथ. मुझे कोई वो नहीं है कि मैं सिर्फ सर्टन फॉलोअर्स के लोगों को बुलाऊं इस चैनल पे, सर्टन फॉलोअर्स को सिर्फ रिप्लाई दूं. जनरली अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है इस पॉडकास्ट पे आने का, हिट मी ऑन ट्विटर, हिट मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड यू कैन जंप ऑन. कोई उसमें वो नहीं है, एतराज़ नहीं है मुझे. आई वुड लव टू हैव फैंस. आई वुड लव टू हैव, if you're a Pakistani fan, if you're an England cricket fan, I would love to have you guys on here as well and have some of those discussions, because obviously हम लोग दोनों इंडिया से हैं, तो हम लोग थोड़े बहुत इंडियन बायस्ड होते हैं. Obviously we're going to support him, but it's always nice to have different perspective on things. So yeah, thank you guys for watching, and hope you guys enjoy the podcast, and we'll see you guys next time.